स्कूल में सिखाया था कि आपको हर सवाल का जवाब आना चाहिए, बट मुझे लगता है गलत सिखा दिया। वाई? बिकॉज द सीक्रेट लाइज बिहाइंड आस्किंग द राइट क्वेश्चन। आप लाइफ में आंसर्स ढूंढ रहे हो, बट मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या सवाल सही है? हाउ अबाउट वी चेंज आवर क्वेश्चन एंड सी द मैजिक हैपन, हाउ इट चेंजेस आवर लाइफ। अगर आपको सवाल पूछने आ गए तो आप सामने वाले का जवाब कंट्रोल कर सकते हैं। Yes, you heard me right. If you know what to ask, you can really control what you will get to listen, because the entire science of getting a right answer only depends on asking a right question. This is not my concept. I learned this from a book by Marilee Adams. It's called Change Your Question, Change Your Life. So this book basically talks about how your entire life and everything around you can change only if you learn the art of asking right questions. Now let's understand, our brain is divided into two parts. One is the judge's mindset and the other one is a learner's mindset. Let me explain you what is both of them. So judger mindset ये होता है that somebody who's always having a preconceived notion, somebody who's not at all flexible, somebody जो किसी से मिलता है before he can have a conversation with that person or he can actually meet that person, वो already judgment शुरू कर देता है. He is somebody who lives with blames, assumption, ego and lot of criticism. Whereas a learner's mindset is always curious, open to learning, has a very different perspective of looking at things in life. वो जब भी किसी से मिलता है किसी को जज नहीं करता, and he or she takes the way things are coming. So it's a very contrast of both the things, but trust me, your growth, your success only lies if you have a learner's mindset. Now डिसीजन हमारा है, हमें कौन सा पाथ चूज करना है, जजर्स माइंडसेट, क्लोज्ड एवरीथिंग, और अ लर्नर्स माइंडसेट वेयर यू हैव एन ओपन माइंड एंड यू आर ऑलवेज ओपन टू न्यू थिंग्स. मोस्ट ऑफ अस इन लाइफ गो थ्रू द सेम नेगेटिव क्वेश्चंस टाइम एंड अगेन. फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? Why am I the one who's always unlucky? Why did this happen to me? Why am I not able to do this? क्या हम अपने सवालों को बदल करके अपनी जिंदगी का इम्पैक्ट बदल सकते हैं? What if the quality of life depends on the quality of your questions? Steve Jobs once said that there are a bunch of crazy people who want to do things differently in life and they do it. So what do these crazy people really do? What's different in them? They look at life differently and they ask different questions. Now let us understand why questions matters. जिंदगी में होता क्या है that हम सब सही आंसर्स को ढूंढ रहे होते हैं, whereas हमें सही सवाल पूछना है. बिकॉज अगर हमें सही सवाल पूछना आ गया, आंसर को तो हम खुद ही कंट्रोल कर लेंगे. क्वेश्चंस डिसाइड फोकस और फोकस डिसाइड करता है डेस्टिनी को. Let me give you an example. Whenever there is something that happens with us, what do? We ask a question to ourselves that why am I always failing? गलत है ये. What if I ask myself कि यार मैं फेल हो गया, लेकिन इस फेलियर से क्या लर्निंग मिली? जब हम बोलते हैं why am I always failing, our brain is always looking at the negative patterns and all the failures and the entire journey that we gone through while failing. Whereas if we change the question and say failure तो हो गया, that's fine, but मैं इससे सीखा क्या? What was my learning? And automatically the brain starts focusing on learning. So did you just see the impact? Why am I always failing? What did I learn from this failure? It's a mind shift, judge's mindset and learner's mindset. Our brain is like Google search engine. जो टाइप करोगे वही रिजल्ट मिलेगा. SEO भी काम करेगा. अगर नेगेटिव टाइप करोगे तो पूरे इंटरनेट पे नेगेटिव ही दिखाई देगा, और अगर पॉजिटिव टाइप करोगे तो पूरे इंटरनेट पे पॉजिटिव दिखाई देगा. एग्जैक्टली योर ब्रेन. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क योर ब्रेन, द काइंड ऑफ आंसर्स यू विल गेट. नाउ लेट मी गिव यू सम रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव क्वेश्चंस. सिनेरियो 1, रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन. एक इंसान पूछता है, व्हाई डज माई स्पाउस
or my partner doesn't understand me. Now, a changed version of this question is, what can I do in a way so that our relationship gets better or my partner can understand me better? Now let's take one more scenario, which is a career based. One question is, why am I not successful? Second question, what can I do in terms of my skill set so that I can be more closer to my success? Oprah Winfrey said, turn your wounds into wisdom. और ये तभी पॉसिबल है जब हम सही सवाल पूछें. Let's understand the power of empowering questions. So all empowering questions will always start from how, what, and who, and never why. Let me give you an example. Why am I stuck in this situation? We change that and we do it. What can I do to get better or to get out of this situation? Let me give you one more example. Why I am the unlucky one? Or what can I do to make my luck better? So जैसे ही आपने सवाल बदले, आपका माइंडसेट बदलता है और आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा. Questions are fateful. They determine our results. You will start looking for opportunities and not obstacles. तो जिंदगी को बदलने के लिए आपको हर चीज का जवाब नहीं चाहिए. जो चाहिए आपको वो है अच्छे सवाल. ऐसे सवाल जो आपको एम्पावर करें, ऐसे सवाल जो आपको मोटिवेट करें, ऐसे सवाल जो आपको वो जवाब दें जो आप सुनना चाहते हो. जब आप ये आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन सीख जाओगे, देन ट्रस्ट मी, लाइफ ट्रूली चेंजेस. If you like this content, my humble request, please like, share it with someone who will also appreciate the same. Subscribe to the channel because I want more such content coming your way. Until then, I'm Sumit Khubchandani.